Hello, welcome to this channel. Today you are going to learn about business math, and business math mainly comprises of profit and loss. As you know, math is the base of any business, so let's learn. Today our lecture is about profit and loss, and we will talk about basic definitions of these terms, the difference between profit and loss, and we will solve problems involving profit and loss. So hurry up, open your notebook, take out your stationery so you can note down and calculate it. Here is a statement that you can see on your screen. One of the John's hobbies is knitting sweaters and hats. Since winter is fast approaching, he decided to sell what he created through an online shop. How can he ensure that he will gain profit and not incur any losses? Let's join John's journey as he learns about the basic concepts of profit and loss. If you find any problem regarding understanding this statement, I just translated this statement in Urdu in the next slide. जॉन के मुशागिल में से एक स्वेटर और टोपियां बनाना है। चूंकि मौसम सरमा तेजी से करीब आ रहा है, इसलिए इसने अपनी तख्लीक करदा चीज़ों को एक ऑनलाइन दुकान के जरिए से फरोख्त करने का फैसला किया है। वो कैसे यकीनी बना सकता है कि इससे नफ़ा मिलेगा और नुकसान नहीं होगा? आइए जॉन के सफ़र में शामिल हों, क्योंकि वो नफ़ा और नुकसान के बुनियादी तस्वुरात के बारे में सीखता है। John, first of all, what is the difference between cost price versus selling price? Cost price, CP, the price at which the product is purchased, versus selling price, SP, the price at which the product is sold. कीमत खरीद, कीमत फ़रोख्त। कीमत खरीद जिस पर प्रोडक्ट खरीदी गई और कीमत फ़रोख्त जिस कीमत पर प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दी गई। After knowing about the difference between cost price versus selling price, we will discuss about overhead expenses. It refers to all the additional expenses such as transportation, rent, repairs, etc. It is always included in the total cost of the product. All these things, all additional expenses are also part of business, so it always included in the total cost of the product. After that, you can calculate your profit ratio. ओवरहेड एक्सपेंसेस से मुराद हैं ऊपरले अखराजात। इससे मुराद हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के अगर आगे हैं, रेंट है, रिपेयर्स हैं। लाइक आप सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके उसको वहीं के वहीं सेल तो नहीं कर देंगे ना, आपको बल्क में ज़्यादा मिकदार में चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी और उसको शॉप तक लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी करवानी है, उस डिलीवरी के सारे चार्जेस इसमें इंक्लूड होते हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए, उस सारे अखराजात को निकालते हुए फिर आप प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। What is profit? How you calculate profit? What is its formula? Profit is gained when the selling price is greater than the cost price. अगर हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर हो जाए तब हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है। और हमें कैलकुलेट कैसे करना है? सिंपली वी विल सब्ट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस फ्रॉम सेलिंग प्राइस। जो हम जिस कॉस्ट पे हमने ख़रीदा था और जिस कॉस्ट पे सेल किया उनको हम माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट का पता चल जाएगा कि इतनी अमाउंट का हमें प्रॉफिट आया। Now you can calculate the percentage of profit using profit percentage is equals to profit divided by CP cost price multiplied by 100. You can simply divide profit by cost price. आप profit को cost price से simply calculator पे divide कर सकते हैं and after that you can simply multiply by 100. You will get the percentage of the profit. Let's practice. John bought all the raw materials for one sweater at $50. He sold it at $70. How much profit did he gain? What is his percentage of profit? जॉन ने अपने एक स्वेटर के लिए जो भी सारा रॉ मटेरियल ख़रीदा उसमें उसकी कॉस्ट $50 आई है और उसने वो स्वेटर आगे $70 का सेल कर दिया है, तो उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज क्या रही और अमाउंट में उसको कितना प्रॉफिट हुआ एक स्वेटर से? थिंक अबाउट इट। डिड यू थिंक अबाउट इट? हैव यू सॉल्व ऑन योर नोटबुक? लेट्स सॉल्व। See on your screen, you can see the formula of profit. Profit is equals to SP subtraction CP. SP stands for selling price and CP stands for cost price. Our selling price is $70 and our cost price is $50. So we simply subtracted $50 from $70 and John gained a profit of $20. Now we will calculate the percentage profit of John's. As he got the profit of $20 and his cost price was $50, simply we will divide profit by cost price and after that we will multiply by 100. When we divide $20 by $50, we got the answer $0.4 and we multiply this answer by 100 so we can get the profit percentage, and his profit percentage is equals to 40%. Now what is loss? What is the formula for calculating loss?
Loss is incurred if the selling price of the product is less than the cost price. अगर हमारी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम हो रही है तो अब हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। और हम फिर किस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपली वी विल सब्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। जब हम सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट का लॉस जो है वो हमारे बिजनेस को हुआ है। Just like profit percentage, we can also calculate our loss percentage by using this formula, loss divided by CP cost price multiplied by 100. In this way, we can calculate the loss percentage of the business. Just like profit percentage, we can also calculate our loss percentage by using this formula, loss divided by CP cost price multiplied by 100. In this way, we can calculate the loss percentage of the business. Let's practice a sum related to loss. John plans to sell one knitted hat for $30. However, due to certain limitation, he was only able to sell it for $18. Now you clearly understand that his cost price is greater than selling price. Now we have to calculate how much loss did he incur and what is his percentage of loss. We can calculate loss by using simply this formula, cost price minus selling price. As the cost price was $30 and the selling price was $18, when we will subtract 18 from 30, we will get $12. So John incurred a $12 loss. Now we have to calculate the loss percentage of John's. Loss percentage formula is equals to loss divided by cost price multiplied by 100. Loss was $12 and the cost price was $30. Simply when we will divide, we got the answer $0.4, and in the end we will multiply this by 100 and we got the loss percentage is equals to 40%. In the previous sum, his profit was also 40%. As you learn profit percentage, loss percentage, now you have to check your concept, whether your concept is clear or not. Here is a statement. The ingredients for one whole pizza cost $45. It was cut into 8 pieces and was sold $4.50 each dollar. Was this a profit or a loss? Support your answer by solving on your notebook. क्या आप इसे अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर रहे हैं? अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे इसका आंसर जो है कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे मैं उसको ट्रांसलेट भी कर देती हूँ कि एक पूरे पिज़्ज़े की जो कीमत है वो $45 है। पिज़्ज़े को 8 स्लाइसिस में कट किया गया है और हर स्लाइस जो है वो $4.50 में सेल किया गया है। तो सबसे पहले आप सब चेक करें कि ये टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये आपका बिज़नेस जो था वो फ़ायदे में गया या नुकसान में। Now you can check whether your answer is correct or not. As the price of one piece was $4.50 and they sold 8 pieces, so we simply multiply $4.50 by 8 and we will got the answer $36. And the price of total whole pizza was $45. So it was a loss because the cost price $45 is greater than the selling price, that is $36. This is all about today's lecture. Now you can calculate easily profit and loss and their percentages of any business. Let's review when your business will be in profit and when your business will be in loss. If the selling price is greater than cost price, then your business will be in profit, and if the selling price is less than cost price, then your business will be in loss. Hope all of you have cleared your concept. Thank you for listening me. Have a good day. Allah Hafiz and take care.